Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business environment. Today we are going to discuss a new topic of Unit 1, that is the features of business environment. Now, starting with the environment features, let's look over the business environment inherent part of the business. Like it always attached to the business, and business require a good framework of economical, legal, and political and social factors to perform its work smoothly. In order to perform work smoothly, the business has to require framework of legal and political and social factors so that the business can perform smoothly. So, what are the features and characteristics and nature of the business environment? What makes the business environment unique, and what are the features of the business environment? Business environment के अंदर क्या features हैं, क्या characteristics हैं, जिसकी वजह से हम उसको business environment कह सकते हैं. So, let's begin with the first one, that is a complexity. Business environment has become extremely complex. It is governed by the internal and external factor. As you know that business environment में दो factors involved होते हैं, दो environment involved होते हैं, that is internal and external environment. और ये जो factors होते हैं, ये factor internal जो external factors होते हैं वो keep changing, and they keeply changing, and as well as it unpredictable. So the business has to operate under this complexity, and they have to adapt themselves in order to seize the opportunity. Otherwise, it create a threat for the business. So business को external changes के according अपना आपको adapt करना पड़ता है. Unpredictable changes होते हैं. The business environment consists of number of factor, event and condition and influences arising from the different sources. So number of changes होते हैं, and these changes are unpredictable. So this create a very complex kind of environment for the business. That's why business environment is very complex kind of features. Now moving toward the next characteristic of business environment, that is a dynamic. Dynamic, it means it changes frequently. The business environment basically is actively changing, and proactive attention to changing allow business to flourish. The business environment क्या होता है? Actively changing and proactive attention to the changing allow. Proactively, it means that business को अपने environment में बहुत proactively सोचना पड़ता है. Means फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने डिसीजन मेकिंग लेने पड़ते हैं. इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन आर बीइंग क्रिएटेड, they have to they have to take decision in a proactive manner. तो क्योंकि जो बिजनेस है इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है और कीप चेंजिंग. जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है, कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट कैन बी क्रिएटेड और इनोवेशन आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ सकता है. ऑपरेटिंग बिजनेस इन मैनी कंट्रीज आर द मेजर चैलेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट. तो ये डायनेमिक इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग है. तो बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स सबसे बड़ा यही है कि ड्यू टू द मैनी एंड वेरिड इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग, दे आर डायनेमिक इन द बिजनेस इन्वायरमेंट. तो काफी फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कीप चेंजिंग होते रहते हैं, और इनफ्रीक्वेंटली चेंजिंग के साथ बिजनेस को प्रोएक्टिव मैनर में they have to adapt themselves in order to compete with the competitor, or in order to survive in a long term. तो competitive dynamic environment में survive करना है. That's why the कई dynamic business, एक तरह का business environment features क्या है, dynamic है. Now moving toward another feature, that is uncertainty. Risk in inherent features of the business. Definitely risk होता ही होता है business में. You can't avoid the risk. The external forces poses challenges. जो external forces होते हैं वो challenges create करते हैं, feature risk create करते हैं, challenge create करते हैं business के लिए, as well as uncertainty to business को uncertainty देते हैं. For instance, it's difficult to anticipate changes in the fashion and trend by the marketer. तो they always being a uncertainty in the environment in the business. So that's why that this is one of the important features of the uncertainty. हमेशा business environment जो होता है, it always bring uncertainty. तो ये एक another feature है जो it makes business environment unique.
So now moving toward the next, it is a business environment multi-dimensional. Business environment का features ये भी है कि multi-dimensional environmental changes may not affect all the business in a similar manner. Let's you have to understand one thing that क्या होता है कि ये मल्टीफेसिटेड है, बिजनेस इन्वायरमेंट मल्टीफेसिटेड है. इट मींस दे आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट व्हिच आर अलाउड बाय द चेन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन. जो इन्वायरमेंट का चेंजेस है वो एक चेन की तरह काम करता है जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन आते हैं. देयर इज फ्रीक्वेंटली सीन व्हेन द सेम डेवलपमेंट इज वेलकम एज अ अपॉर्चुनिटी बाय द वन कंपनी एंड व्हाइल द अनदर कंपनी परसीव एज अ थ्रेट. जहां बिजनेस इन्वायरमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही चीजें एज अ अपॉर्चुनिटी होती है एंड अदर कंपनी के लिए वो एज अ अनफेवरेबल और थ्रेट कंसिडर होती है. इट मीन्स दैट दीज चेंजेस कैन बी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अ प्रोडक्टिव एंड पॉसिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अगर बिजनेस में कोई टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो वो किसी बिजनेस के लिए उसकी बिजनेस की सर्वाइवल और सक्सेस के लिए बहुत एज ए अपॉर्चुनिटी हुआ. इन अ सेम मैनर जो दूसरी कंपनी है वो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट या टेक्नोलॉजी का इनोवेशन को अगर अडॉप्ट नहीं कर पाई देन इट क्रिएट अ थ्रेट टू दैट कंपनी. तो यहाँ पर इन बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी पॉजिटिव टू वन कंपनी एंड इन अ सेम मैनर सेम काइंड ऑफ change environment it impact in a negative way to the another company. इसलिए मल्टी डायमेंशनल है. एक कंपनी को पॉजिटिव रिएक्शन होगा, सेम दूसरी कंपनी को सेम इन्वायरमेंट चेंजेस में उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो टोटली डिपेंड कि बिजनेस इन्वायरमेंट मल्टी डायमेंशनल है, किसी को पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, किसी को उसी का नेगेटिव रिएक्शन मिल सकता है. तो इट्स मल्टी डायमेंशनल. नाउ द अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस. The business environment determine the scope of business. The business environment जो होता है it determine the scope of business. ये business के scope को, business की activity के scope को decide करता है. No business enterprise can afford to neglect or ignore the environment of the business. So thus we can say that business environment create the framework within the all the business activity are to be conducted. The business environment decide करता है कि within what framework, within what limitation, with what limit the business activity have to be performed or conducted. तो स्कोप, बिजनेस का स्कोप कौन डिसाइड करता है? बिजनेस का इन्वायरमेंट डिसाइड करता है. इन्वायरमेंट डिसाइड द बिजनेस स्कोप कि कॉमर्स कितना होना चाहिए, ट्रेड कितना चाहिए, इंडस्ट्री कितने लेवल पे एक्सप्लोर करेगी. इट टोटली डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट अगर सही है तो बिजनेस अच्छा एक्सप्लोर करेगा, स्कोप उसका बिजनेस का एक्सप्लोर करेगा. अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस को तो वहां स्कोप उसका बिजनेस का कम हो जाएगा. फार रीचिंग इम्पैक्ट, इट मीन्स दैट environment has a direct and far reaching impact on business. The growth and possible profitability of a organization or the business uh, depend critically on the environment in which they exist. कोई भी बिजनेस का जो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी होता है इट टोटली डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट. द इन्वायरमेंट प्रोवाइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट and the manager should take advantage of this opportunity presented. So जो environment है it has a direct and far reaching impact on the business. That is a important feature of the business environment. Another feature that is a symbiotic relationship, that is the most important word I have put it here. So please student make a point here. Symbiotic relationship क्या होता है? The relationship between the firm and its environment. जो भी फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है इसको ये बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट. दोनों को ही बेनिफिट है. जब बिजनेस को भी इन्वायरमेंट से बेनिफिट हो रहा होता है और इन्वायरमेंट को बिजनेस से बेनिफिट है मीन्स इन्वायरमेंट एंड एज वेल एज द बिजनेस बोथ गेट द बेनिफिट. जब दोनों को म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है दैट रिलेशनशिप इज नोन एज symbiotic relationship. तो basically जो symbiosis is word is basically taken from the botany and it refer to a mutually beneficial relationship exists between the tree and small plants. तो ये वहां से वर्ड लिया गया बट इट यूज इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट. तो बिजनेस जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है इन्वायरमेंट के साथ एंड इन्वायरमेंट जो होता है वो रिलेशनशिप करता है बिजनेस के साथ. इट मीन्स बोथ पार्टी, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट बोथ दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिटेड करते हैं.
Now the another point is the environmental factor different from country to country. Definitely जो environmental factors होते हैं वो हर एक country के according different different होते हैं. The generally environmental factor generally vary from country to country. Or you can say that the environment that is a typical of India may not be found in another company like USA, China, UK, and Japan. In a similar manner, जो America, British or Japan का environment may not found in India. So every country has a different kind of environment factor. और ये environment factor उस company उस country के organization और business को impact करते हैं. तो the environment factor can be vary depend upon the country to country. Now the another that is the internal and external environment. The business environment has an internal and external component. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होते हैं? टेक्निकल, फिजिकल, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव. दीज बेसिकली है इन्वायरमेंट इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर बेसिकली अनकंट्रोल फैक्टर होते हैं. सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग के बिजनेस की वर्किंग को. तो वी कैन से दैट द एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं बेसिकली क्रिएट अ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द business. Now moving toward the last point, that is a scope of business. I have already discussed this point earlier. So this is all about my today lecture. Thank you, my dear student.